Hello everyone, hope you all are doing very well. Welcome back to my channel UGC Net and JRA with Jayanti. एंड जैसा कि आप सबको पता है जून का जो हमारा एग्जाम हुआ था दैट हैज बीन रिवोक्ड सो वो कैंसिल हो चुका है. यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ अगेन एंड द स्टूडेंट्स हु कुड नॉट अटेम्प्ट इट वेरी वेल उनके लिए एक अच्छा चांस है कि वो फिर से ट्राई कर सकते हैं विद अ वेरी गुड स्ट्रेटजी अगेन. एंड एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर डूइंग एज यू नो, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं देन प्लीज गो बैक टू माय चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोस. इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू. So now currently we are doing all the topics of teaching aptitudes one by one because our strategy is to complete the topics with its like basic foundation and then to discuss all the PYQs from that topic so that जो भी topic हम पढ़ रहे हैं वो हमारा पूरी तरीके से prepare हो जाए. You don't need to go anywhere else and read anything else for this topic anymore. Okay, like today I have taken the topic learners characteristics. There are many questions in the previous year you can find out from this topic which is learners characteristic. टाइप्स ऑफ लर्नर्स, अलग अलग टाइप्स के लर्नर्स, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं. एंड गोइंग फॉरवर्ड अगले साल या फिर इस साल जून में जो जब भी एग्जाम होगा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स. Okay, so I have included the most important part of this topic in this slides in this video. आप इस वीडियो को देखो, it will be very helpful for you to solve all the questions regarding learners characteristic in your exam. Okay, and also different types of learners जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आ चुके हैं and आएंगे भी. I have included all the PYQs. You don't need to go and search for the PYQs of this topic. So will be giving the concept clarity first of all, and then we'll discuss all the PYQs from 2020 to 2024 जो भी इस टॉपिक से आए हैं अब तक वो सारे क्वेश्चंस, ताकि सब कुछ आपका यहीं पे प्रिपेयर हो जाए एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. ओके, so let me start with the first slide. What do we understand by learners characteristics? Learners characteristics means क्या? जो भी हम like learners होते हैं, अगर टीचर सेम हो तो भी सारे learners एक जैसा सीखेंगे ये जरूरी है? No, that's not important and that's not possible also. बिकॉज अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, सेम टीचर 10 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो सारे स्टूडेंट्स एक ही सीखेंगे ये जरूरी नहीं है. बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो. व्हाट आर दे लर्निंग? ओके, so characteristics defines their personality, academic and social background, cognitive self, which may influence how and what they learn. वो क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, कितना सीखते हैं, वो सब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे डिसाइड होता है. Okay, so first you need to know that their characteristics have been divided on the four parameters on the basis of four types: academic characteristics, social characteristics, emotional characteristics and cognitive characteristics. So एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं which of the following are basic characteristics of learners. So आपको चार टाइप्स याद रखने हैं: academic, social, emotional, cognitive. अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर. इनमें से कौन सा एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन चारों में कौन कौन से टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं लर्नर्स के. ओके, एज यू कैन सी इन ब्रीफ, एकेडमिक इज रिलेटेड टू एजुकेशन, क्या आपका एजुकेशन लेवल है. सोशल इज रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी इन द सोसाइटी. इमोशनल इज फीलिंग्स एंड कॉग्निटिव इज रीजनिंग. लेट मी शो यू इन द इलाबोरेटेड मैनर. एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर्स के आपको चूज करने हैं. ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव गिवन द मेन वर्ड्स and also highlighted them in bold letters so that you find it easier. एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो आपका एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक है एंड दैट ऑल्सो लाइक अफेक्ट्स वॉट एवर यू आर लर्निंग एंड हाउ एवर यू आर लर्निंग. आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से भी इफेक्ट होता है. तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड लेवल है, नॉलेज ऑफ लर्नर, आपको जो पहले से आपका जो नॉलेज है, एंड स्कॉलरली टाइप, जो आपके पढ़ने का जो तरीका है, आप अभी तक किस टाइप के स्टूडेंट रहे हो, योर एकेडमिक बैकग्राउंड comes in your academic characteristics. Social dimension, social means sense of identity, finding one's role and purpose, taking risk as a natural part of this journey and work as a member of the team. When you become social, all the characteristics related to the society, related to the outsiders, like how do you work in a team, आप एक टीम में कैसे मेंबर की तरह, टीम मेंबर की तरह काम कर सकते हो, एंड हाउ डू यू रिएक्ट एंड हाउ डू यू लर्न विद अदर्स, आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हो, दूसरों के साथ कैसे सीखते हो, हाउ डू यू वर्क इन अ सोसाइटी, आप एक सोसाइटी में किस तरह का रोल प्ले करते हो, दैट बिकम्स योर सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स.
तो एग्जाम में आप कैरेक्टरिस्टिक्स में जब भी आपको सोसाइटी से रिलेटेड कुछ दिखे, टीम वर्क से रिलेटेड कुछ दिखे, तो दैट बिकम्स योर सोशल कैरेक्टरिस्टिक. Whatever we will be learning here will be from exam point of view only. जो भी हम पढ़ेंगे उसको हम एग्जाम से रिलेट करने की कोशिश करेंगे एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि अगर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको मुझे कैसे टैकल करना है. ओके. इमोशनल डायमेंशन फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल थिंक एंड फील अबाउट देमसेल्व्स एंड अदर्स. आप कैसा फील करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, आपके इमोशंस कैसे हैं, दैट इज योर इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक. Then cognitive is your intellectual level, IQ level also we can say. It involves the thought and reasoning. What is your thinking process? What is your perception? जैसे बहुत सारे लोगों का अलग अलग माइंड परसेप्शन पहले से बना हुआ है. मेंटल कैपेबिलिटीज, हाउ कैपेबल आर यू फ्रॉम योर माइंड एंड हाउ इंटेलेक्चुअल आर यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स. सो आपके इनमें माइंड की जो मेंटल कैपेबिलिटी है, जो रीजनिंग एंड लॉजिकल कैपेबिलिटी है, जो थोड़े एक्स्ट्रा क्रिएटिव कैपेबिलिटीज हैं, वो सारी आपकी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगी. होप इट्स क्लियर. समटाइम्स देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन विच इज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. कभी कभी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स नाम का भी एक डायमेंशन आ जाता है. तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी क्लियर, इट्स योर पर्सनल, लाइक इट्स अबाउट योर एज, जेंडर, लैंग्वेज स्पोकन, कल्चरल बैकग्राउंड. तो आपका पर्सनल जो है दैट इज योर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक. इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं. सो आई हैव मेंशन एवरीथिंग about characteristics and types of characteristics of a learner. Clear? Coming to the next part. Characteristics of effective learning. क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आता है कि इफेक्टिव लर्निंग के लिए, लाइक लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर्स में होने चाहिए. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स वी नीड फॉर इफेक्टिव लर्निंग. So all the characteristics you need for effective learning is level of interest and enthusiasm. It's not like you're just reading in the class just because you have to sit there. आप एक घंटा के लिए क्लास में बैठे हो क्योंकि आपको बैठना है. नो, यू शुड हैव दैट लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड इंथुजियाज्म टू लर्न कि यस आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न दिस, आई वांट टू लर्न दिस. दैट बिकम्स योर कैरेक्टरिस्टिक फॉर इफेक्टिव लर्निंग. लर्निंग तो ऐसे भी हो सकती है बट इफेक्टिव लर्निंग मीन्स दैट बिकम्स यूजफुल, बेनिफिशियल फॉर यू. अटेंशन स्पैन एंड रेट ऑफ रिटेंशन. आपका अटेंशन, आप किस तरह से उसको रिटेन करते हो, and learning style, learning strategy, then individual mental capacity, previous knowledge and experience, grasping ability, aspects of society, your attitude towards learning. Attitude means आप एग्जाम लाइक पर लर्निंग को किस तरह से देखते हो, आपके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है या बस आप ऐसे ही कर रहे हो नेम से. नो, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग. एक्टिवली इन्वॉल्व इन लर्निंग. व्हेन यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व, इट्स नॉट लाइक टीचर इज टीचिंग यू एंड यू आर जस्ट like grasping the things and आप कुछ उसमें actively involved नहीं हो, then it does not become your effective learning. To become like participative in effective learning, you have to participate actively. आपको active रहना होगा क्लास में. And there should be enough motivation among the teachers and pupils to participate. आप मोटिवेटेड होने चाहिए. देयर शुड बी इनफ मोटिवेशन फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके पास हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिस लर्नर में होते हैं, दोज आर नोन टू बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग. सो एग्जाम में अगर इफेक्टिव लर्निंग से क्वेश्चन आए देन यू हैव टू फिगर आउट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. Okay, there's nothing to do with the social background, cultural background in effective learning. Effective learning में आपका social background, cultural background, वो सब characteristics का कोई रोल नहीं है. So you have to figure out in your exam, अगर आपके options में जो like characteristics दिए हुए हैं वो इनमें से कोई हैं तो वो आपका effective learning के लिए important है, otherwise not. Clear? Next, now we need to learn the types of learners, जिससे एग्जाम में बहुत सारे questions आ चुके हैं and always आते हैं. Types of learners and their characteristics on the basis of different types. So सबसे पहले जो types of learners you need to know is adolescent learners and adult learners. Adolescent learners and adult learners के characteristics से, उनके difference से, there are a lot of questions in the previous years and in the upcoming years also there is high chance that you will get question from adolescent learners and adult learners. So दोनों के characteristics में क्या differences हैं, let's try to understand. Okay, adolescent learners are such their physical, emotional, cognitive and behavioral aspects are changing. They are going through changes, physical changes, thinking, emotional changes, cognitive changes, behavioral changes. So they are going through changes. There is nothing stable. तो ये स्टेबल वर्ड अगर आ जाए तो वो एडल्ट लर्नर के साथ जाएगा. यू नीड टू फाइंड द की वर्ड्स इन वॉट एवर यू लर्न, एज आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. जब भी आप कुछ पढ़ते हो
आप उसमें कीवर्ड्स ढूंढो, आप उसको ऐसे पढ़ो सो दैट यू कैन रिटेन इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, आपको याद रह जाए। तो कीवर्ड्स ढूंढो। स्टेबिलिटी, स्टेबल जो होता है वो एडल्ट लर्नर्स के साथ होता है, एडोलेसेंट लर्नर्स के साथ नहीं होता। And they have like two parts: early adolescent 12 to 17 years, late adolescent 17 to 19 years. Now what are those characteristics adolescent learners have? They look for personal identity, they want to have their personal identity, they are not very sure about their identity, so they look for their identity, they look for their activities that suit their needs and requirements. They are not very sure about what they need, उन्हें यही पता नहीं होता है कि उन्हें चाहिए क्या, what are their learning requirements. So they are always looking for the activities whatever suits their needs and requirements. Okay, उन्हें ये श्योरिटी नहीं होती है, they are not sure about what do they need. Then when these learners lost interest in a subject matter, जब उनका एक बार इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या फिर वो एक बार फेलियर को फेस करते हैं, they don't want to try it again, दे बिकम क्वाइट डिसरप्टिव, वो होपलेस हो जाते हैं और दोबारा ट्राई नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज ड्यू टू द पीयर प्रेशर ऑल्सो। पीयर प्रेशर ये एक वर्ड है जो आपका एडोलेसेंट लर्नर्स का कीवर्ड है। पीयर प्रेशर इज फाउंड इन एडोलेसेंट लर्नर, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं आसपास के लोगों से। ओके, नीड हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम टीचर, अनदर कीवर्ड। if the learners need help and support and guidance from the teachers, that is your adolescent learner, not adult learner, because adolescent learner are quite less mature. ओके, ये कम मैच्योर होते हैं, इन्हें हेल्प की, सपोर्ट की एंड गाइडेंस की जरूरत होती है टीचर से। दे नीड टू बी डायरेक्टेड एंड गाइडेड टुवर्ड्स द पाथ ऑफ लाइक सक्सेस। okay, they can perform challenging activities, they are sometimes very anxious about doing something new, तो ऐसा नहीं कि वो challenging activities नहीं कर सकते, they can do. So these are the characteristics of adolescent learners which should stick to your mind. आपको like summarize कर लेना है कि adolescent learner means they are less mature, they are quite like not sure about anything, what do they need, and they're not sure about personal identity, they need help and support from the teacher, and they can perform challenging activities. So these are the important characteristics of adolescent learners. Okay, coming to the adult learners. Adult learners में क्या difference है? They are quite mature than the adolescent ones. They are generally above 18 years old and highly disciplined and learn by experience. They are highly disciplined, they learn by their experience, they are result oriented. उन्हें रिजल्ट कैसा आएगा वो उनका मेन होता है, वो बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर से प्रभावित नहीं होते हैं। एंड देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली डिफाइंड, दे नो देयर स्पेसिफिक गोल्स and they know their learning objectives very clearly, they don't have any doubt about their objectives and goals. Okay, they are actively involved in selecting what and how to be learned, they are actively involved, उन्हें पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, they don't need help from the teacher and they don't rely upon anyone else, they rely upon themselves, उन्हें खुद पर भरोसा होता है। that is the characteristic of adult learners, they possess wide knowledge, experience and expectation. I have given these in points so that it becomes easier for you to see, learn and retain. Okay, so hope it's clear the difference between adolescent and adult learners. इनमें से जो भी क्वेश्चंस हम देखेंगे आप वो सॉल्व कर पाए, आई होप सो। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप्स, देन जो क्वेश्चंस आते हैं वो दूसरे टाइप के लर्नर हैं आपके फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स एंड फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। Okay, what is field dependent learners? Field dependent learners have some characteristic which I have given in points and highlighted them. Field dependent, you need to find the key word from the word. Like dependent means they prefer to work with others, they don't prefer to work alone, they likes to cooperate, because dependent means depend, they depend upon someone other, so they don't like to work alone, they work like they like working with team with someone else, they likes to cooperate, they likes discussing with others, they are global learners and personalized curriculum. They are global learners and personalized curriculum means curriculum उनका personalized होता है, customized होता है, according to the need of the learner होता है, and they focus on general meaning. They don't go on detailed discussion of anything. They don't focus on the details. They just generalize it. They focus on general meaning. Okay, these are the main characteristics of field dependent learners. So you have to match the keywords with the word dependent. Next, field independent learner. Independent means the name it says that
they want to work alone, they like working alone, they likes to compete, they likes to have the competition with others rather than discussing with others. Okay, rather than working with others, they like to compete with others. They are rational, appeal without consulting other, they are quite rational in thinking, they are analytical learners, they want to analyze what they are learning, and tend to perceive elements independently a context or field and focus on details. They focus on details of something, whatever they are learning. So these are the differences. Field dependent like to work with others, independent like to work alone. Dependents like to cooperate, independent likes to compete. And dependent focus on general meaning, independent focus on details. Okay, and personalized curriculum is available for dependent learners. So these are the characteristics. If you understand and if you find the difference between them, you will find the questions very easy from this topic. Okay, next. And there are again different types of learners जिसमें से क्वेश्चन आते हैं. So I have included all the types of learners which you need to know. First is physical, kinesthetic, tactile. These three learners are same. इनके तीन नाम हैं. So I have included all the three names so that you don't get confused if you get any name. Physical learner, kinesthetic learner or tactile learner. They all are same. These learners prefer to get hands-on experience with things. उन्हें practical चीजें करके सीखना, experience करके, practical करके सीखना बहुत पसंद होता है. They like to have physical experience, tangible things, real life touch and feel experience, using props, using physical evidence to make learning more understandable for them. So physical learners, kinesthetic learner और tactile learners कौन से हो गए? जो छू के, real life touch, practical, physical होकर, जो like physical evidence देखकर जो सीखना पसंद करते हैं, जिनको बस सुन के विश्वास नहीं होता है, उनको देख के प्रैक्टिकल करके मतलब सीखना है. दैट इज योर फिजिकल लर्नर्स और टेक्टाइल लर्नर्स. क्लियर? तो एग्जाम में ऐसे अगर कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखते हैं विच प्रेफर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, फिजिकल एक्सपीरियंस, यूजिंग प्रॉप्स एंड फिजिकल एविडेंस, देन इट गोज टू योर फिजिकल, काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल लर्नर. क्लियर? Next, visual or spatial learners. Visual or spatial learners are the learners which focus on visual memory. जैसा कि नाम से ही क्लियर है. ओके, सो ये आपको नाम विजुअल तो पता चली जाएगा. ये स्पेशल जो लर्नर है ये भी इसी का दूसरा नाम है. मे बी यू गेट दिस नेम सो दैट आई हैव गिवन बोथ ऑफ देम. यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड. सो ये कौन से लर्नर्स होते हैं? जिन्हें देखकर ज्यादा समझ में आता है. दे लाइक चार्ट्स, इमेजेस, फोटोज. दे प्रेफर पिक्चर्स रेदर देन वर्ड्स. विजुअल रिप्रेजेंटेशन से जो ज्यादा सीखते हैं, जिनको पसंद होता है, दे हैव अ गुड अटेंशन स्पैन एंड हाईली ऑब्जर्वेंट. वो पिक्चर देख के बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं. दे रिस्पॉन्ड वेल टू कलर्स एंड माइंड मैप्स. सो ये आपके विजुअल लर्नर्स हो गए. Next is auditory learners. What is auditory learners? What are these type of learner? They are the ones who retain information by listening to information or by saying it aloud. अगर ऑडियो, ऑडिटरी लर्नर्स मीन्स कनेक्ट टू ऑडियो. तो ऑडिटरी लर्नर्स कौन हो गए? जो सुन के, बहुत जोर जोर से सुन के सीखते हैं. दे रिटेन बाय यूजिंग ऑडिटरी सेंस. उनको वॉइस, टोन, पिच में आइडेंटिफाई करना आता है डिफरेंस. दे आर क्वाइट इजी टू डिस्ट्रैक्ट क्योंकि ऑडिटरी लर्नर्स का ध्यान सुनने में होता है, तो उनको डिस्ट्रैक्ट करना इजी होता है. बट दे मस्ट प्रेफर टू रिकॉर्ड क्लासेस. तो जो सुन के ज्यादा सीखते हैं, दैट इज योर ऑडिटरी लर्नर्स. क्लियर? नेक्स्ट, वर्बल लर्नर्स. वर्बल मीन्स the learners who use traditional written material for studying. They use traditional written material. Verbal learners means they stick to words. आपको सिर्फ उसका कीवर्ड याद रखना है. Verbal learner means they learn from words. They like to have a good collection of words, good memory for written and spoken words. They might use acronyms, rhymes, tongue twister, etc. to retain their knowledge. And they are known to be bookworms. किताबी कीड़े जिसे हम बोलते हैं. किताबी कीड़े मीन्स बुक से जो देखा पढ़ लिया याद कर लिया. रिटेन विथ वर्ड्स. दे एंजॉय रीडिंग and they like to read aloud or silent, but they enjoy reading, and whatever they read they try to retain that. So verbal learners means they try to stick to the words. Okay, पढ़ के सीखना, लिख के सीखना. Then next is logical or mathematical types of learner. नाम से क्लियर है. दे लाइक लॉजिक्स, दे लाइक रीजनिंग, दे आर गुड इन आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स एंड सीक्वेंस, दे कैन क्लासिफाई द इंफॉर्मेशन इनटू ग्रुप्स, एंड दे आर नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स. उनका पर्सनैलिटी में ही उनमें एक नेचुरल लव होता है मैथमेटिक्स के लिए. दे आर पर्सनली इंक्लाइंड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स. जिन्हें मैथ्स बहुत पसंद है, जस्ट लाइक मी, आई ऑल्सो लाइक इट, लव इट, आई कैन से. सो दे कैन जनरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप.
This is very important keyword. If you get this characteristic, which type of learners can generate cause and effect relationship in the information? So that is your logical learner or mathematical learner. Okay, क्योंकि cause and effect हमारे logic से होता है. So that becomes your logical learner. Clear? Next. Musical learners, it's very clear from the name. They learn from music. They like to learn to musical notes. They are also easily distracted. They generally become musicians and instrumentalists. Okay, they recognize pattern and sequence in the sounds. So they try to learn through music. That is your musical learner. Next. Naturalistic learners जो नेचर से सीखते हैं, दे आर सिमिलर टू काइनेस्थेटिक लर्नर. काइनेस्थेटिक मीन्स जो फिजिकल लर्नर हमने पढ़ा था, जो रियल लाइफ टच टेंजिबल थिंग्स, एंड दे like to learn by practical things, physical evidence. So natural learners are quite similar. They learn better through experimentation and practical experiences, and they are to be ideally given lessons outdoors. Outdoors means nature, natural जगह में, एक क्लासरूम में बैठ के नहीं, बट एक नेचुरल जगह में जहाँ वो नेचुरल चीजों को देख पाए, देख कर नेचर के साथ कनेक्ट कर सके. दे लव वर्किंग क्लोज टू नेचर. दे आर नेचुरलिस्टिक लर्नर्स. सो दे आर, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम ओनली, बट फिर भी मैंने एक आइडिया दे दिया सो दैट यू कैन रिलेट द ऑप्शंस विथ योर क्वेश्चन. Then linguistic learners. Linguistic learners are a combination of auditory and verbal learners. Auditory means जो सुन के सीखते हैं, and verbal learners mean जो words, they like to have a good memory of words. They retain information much longer by writing, reading, saying it aloud. So इसमें वो mixture है auditory and verbal learners का. They like writing, reading, saying it aloud. They make their notes. So if you make your notes, you like reading, writing, and saying them aloud, then retain them. So you are a linguistic learner. And I think most of the learners will be falling in this group only, right? Because you like making your notes and then you write projects, assignments. So whatever learner is there who is making their note, वो आपका नोट बनाते हैं, आप अगर लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो सारे आपके लिंग्विस्टिक लर्नर हो गए. Okay, then there are two very important types of learner is interpersonal and intrapersonal. ये दोनों नाम के बीच में कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स, सो आई हैव दैट्स व्हाई मेंशन्ड हियर इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल मींस दे बेस्ट वर्क इन ग्रुप्स रेदर देन अलोन. जब आप अकेले होते हो उतना अच्छा काम नहीं करते हो, बट जब आप टीम वर्क में होते हो, टीम में होते हो, देन आप ज्यादा अच्छा काम करते हो. देन यू आर इंटरपर्सनल लर्नर. यू आर सोशल लर्नर बिकॉज यू आर वर्किंग बेटर व्हेन यू आर वर्किंग सोशली. व्हेन यू आर वर्किंग एज अ टीम, देन यू आर वर्किंग बेटर. तो आप एक इंटरपर्सनल लर्नर है. इफ यू वर्क बेटर व्हेन यू आर अलोन, जब आप अकेले होते हो तब आप अच्छा काम करते हो, rather than working in a team, then you are an intrapersonal learner. It is also known as solitary learner. That means they are quite in contrast to social learner. Social learner के just opposite हैं ये. They like to work alone and are usually self motivated. उन्हें अकेले काम करना ज्यादा पसंद है, and they work better when they work alone. That is intrapersonal. So intrapersonal means working alone and doing better when you are alone. Interpersonal means doing better when you are in a team, when you are working with others. So this difference needs to be very, very clear. If you learn all these types of learners which I have mentioned here, then you will get all the questions correct from the types of learners and their characteristics. Now we will see all the PYQs and practice this topic. Okay? PYQs from the types of learners and the characteristics of learners which you can practice to understand this topic more clear. Coming to the first question, which of the following are not the characteristic of adolescent learners? Adolescent learners के characteristics कौन से नहीं हैं? So remember the keyword of adolescent learners and let's try to solve this question. They have, okay, as you can see the question ऐसे नहीं आता है कि which of the following is the characteristic. आपने एक characteristic choose कर लिया and tick कर दिया. The questions are given in a very deep and conceptual manner. तो आपको सारे characteristic होना पता होने चाहिए. You should have the strong basic foundation of this topic to answer the question. Okay, they have uniformity in their physical development. क्या उनके physical development में changes नहीं होते हैं? That is wrong. It's not uniformity. They have, like, they are going through the changes in physical development. So ये गलत है. They have stable. पहले ही मैंने बता दिया था stable word goes with adult learners. Stability doesn't go with adolescent learners. So ये भी गलत हो गया. They often experience mood swings and emotional turmoil. It is correct.
they are going through changes. So emotional changes, emotional mood swings, emotional turmoil, that is correct. They have high hopes and aspirations for their future. Yes, they are very high hopes and they are very aspirant for their future. वो क्या करना है ये नहीं जानते, but they are very like high hopes. They are having high hopes and aspirations for their future. So that is correct. They have increased peer group pressure. पीयर ग्रुप प्रेशर तो एडोलेसेंट लर्नर्स में होता है, हमने देखा था, राइट? वो प्रभावित होते हैं आसपास के लोगों से, उनके प्रेशराइज होते हैं उनसे. सो दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट लर्नर. सो इसमें से पूछा है कौन सा नहीं है. सो आपका ए और बी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर. ओके, दिस वे यू कैन फाइंड योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, statement 1 and statement 2. You have to identify which one is correct. Adolescents tend to be highly self-aware and have a clear sense of their identity. So adolescents tend to be highly self-aware and have a clear sense of their identity. This is wrong. Because we just learned that they look for personal identity. They are searching for their personal identity. They are not very sure about their identity. They are not very clear about their identity. So this is wrong. Statement 2 is adolescents tend to develop ability to see relationship and to solve problems of increasing complexity and difficulty. Yes, they tend to develop an ability. They like challenging activities. They like performing challenging activities. So they are developing an ability to see the relationship and to solve the problem. They are developing. If it is saying that they develop the ability, that means it's correct. So statement 2 is correct. Only statement 2 is correct. Option number 4. Clear? Next. Again, two statements are given. We have to identify which one is correct. Adolescence is the transitional period of growth and development between childhood and adulthood. Adolescence is the period of growth and development. So yes, growth, changes, development, they are part of adolescent learners, so it's correct. Adolescence is a period of emotional stability and great relief. Now you again find the keyword. Stability goes with adult learners, not adolescent learners. So this becomes wrong. Only statement 1 is correct. Okay, next. Which of the following are intellectual development characteristics of adolescent? Intellectual means it's asking about the cognitive characteristics. Okay, cognitive characteristics relate with intellectual characteristics of adolescence. So imagination, abstract emotions, thinking and reasoning, span of attention. Span of attention they do have. Yes, we learned it. They have imagination. वो imagine करते हैं, and they have span of. Sometimes whatever you learn in the basic concept, you don't find that in the options. तो आपको उसको relate करना है. Whatever you have learned in the basic concept, whatever you have understood there, you have to relate it here. So imagination, adolescent का part है. Yes. Thinking and reasoning, yes, it is also a part. Abstract emotion. Abstract emotions means neutral emotion towards anything. Whatever happens, they don't react. Is it true? No, they do react. They have emotional mood swings, emotional feelings, changes. So this is not correct. Abstract emotion means you are neutral towards whatever is happening. तो ये तो नहीं होता है adolescence period में. We are very reactive towards whatever is happening, right? So abstract emotion is not the characteristic. A, C, and D. Option number 3 is your correct. Even if you get an option which you have not learned and you are not sure that is this the characteristic or not, try to relate it with the basic characteristic of adolescent. So basic क्या है? They are very hopeful. They like to think and they like to perform challenging tasks. So they like imagination. But abstract emotion is incorrect. Okay. Coming to the next question. Which of the following is usually not a characteristic of adult learner? Self-learning, rote learning, time flexibility for learning, social learning. So because adult learner are very mature type of learner, so they are not focused to rote learning. Okay, they are not stick with the rote learning. वो रट्टा मारने वाला काम नहीं करते हैं. Because you can relate with the basic characteristic of adult learners because they are mature, they are highly disciplined, they don't stick to the rote learning. Okay, next. A student finds it difficult to understand, analyze, and interpret the concept and principles relating to a subject of study formally prescribed. Which learner characteristics would be most relevant in such a situation to be brought? So he is unable to understand, analyze, and interpret.
So this becomes the lack in intellectual characteristic. Okay, lack in the thinking process, lack in mental capacity. तो वो आपके किस कैरेक्टरिस्टिक के अंडर आता है? जैसा कि हमने पढ़ा, दैट इज योर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक. If you are unable to understand, analyze, your thinking process is weak, your mental capacity is weak, then all comes under the cognitive characteristics, intellectual characteristics. Okay, it's clear? Coming to the next, identify the characteristic of field independent learner. हमने फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर के बारे में पढ़ा है. सो लेट्स फाइंड आउट द कीवर्ड इंडिपेंडेंट. ओके, सीक्स गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर. भैया इंडिपेंडेंट है, सो इंडिपेंडेंट लर्नर डजंट सीक गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर. रॉन्ग. Focus on details of curriculum materials. If you are not sure about, come to the next. Likes to compete. Independent likes to compete. Yes. So सबसे पहले आपको पता है ए नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 गोज रॉन्ग. एंड सी तो होना ही चाहिए, दोनों में सी एंड ई है. लेट्स चेक द बी एंड डी. रिलेट्स concepts to personal experience. Yes. Option number B says focus on details. As we learned, field independent learners is, yes, focus on details. Independent learners focus on details. This is correct. So B is correct and C is correct, and can organize information by himself or herself. E is also correct. So if B, C, D, E all looks like correct, but you have to check which one is more accurate for field independent learner. So B तो correct है because they focus on detail of something. C भी correct है because they likes to compete, relate concepts to personal experience. This becomes quite incorrect. Why? Because independent learner are the analytical learners. They try to analyze the things. They don't relate it with their personal experience. They try to find the pros and cons and the critical analysis of whatever they are learning. So this goes wrong with the independent learner. They likes to compete, they focus on detail, they can organize information by themselves. They don't need help from anyone because they are independent learner. So B, C and E seems correct. Option number 3 goes your correct answer. सो समटाइम्स इन एग्जाम अगर आपको कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, सो सी व्हिच इज मोर एक्यूरेट. फिर से उसको ऑप्शंस को देखो एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हिच गोज विद दिस टाइप ऑफ लर्नर मोर एक्यूरेटली, मोर अप्रोप्रिएटली. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. Personal competencies determine how we manage ourselves. Social competency determine how we handle real relationships in light of, okay, how we handle real relationships. This is the statement. Okay, so yes, both the statements are correct because personal means how you manage yourself. Personal comes with personal, how you manage yourself, that is correct. Social means how you handle the real relationship, how you handle the relationship with other, how you work with others. So social competency comes with others, relate with relationships, relate with others. So that is also correct. Statement 2 and 1 both are correct. Clear? Next, which of the following are characteristic of an adolescent? Again, adolescent learners is there. You have to figure out the characteristic. Increasing independence from adult control. Yes, they are increasing independence from adult control because they want to become independent. They are not independent yet, but increasing independence from adult control. That is correct. Rapid physiological changes. Changes I means that is also correct. Emotionally matured. No. Maturity comes with adult learner, not adolescent learner. Acts rationally. That is wrong. Correct. Rational thinking, rationality comes also with adult learner, not adolescent learner. Increased focus on activities with peer groups. Yes, they focus on working with peer groups. They get pressurized from peer pressure. So peer groups is related with adolescent learner. A, B and E is your correct answer, option number 4. Okay, next. Which of the following are the characteristic of adult learners? Again adult learners से question है. Physiological growth. So growth changes ये हमारे adolescent learner के part है, not adult learner. So this is wrong. Increased focus on activities with peer group. Peer group भी हमारा adolescent learner का part है. Exercise self control. The ability to act rationally. Rational thinking and ability ये हमारा adult learner का part है. Yes. Learning to be independent of guidance and control. इंडिपेंडेंट होने का सीख रहे हैं, वो तो एडोलेसेंस है ना. तो आपका सी एंड डी, एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल,
they have the self control, they can do something themselves, so they have that self control and they have the ability to act rationally. ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपके एडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक हैं. लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होने का सीख रहे हैं, दैट कम्स विथ योर एडोलेसेंस लर्नर. You need to figure out the difference and you need to relate it with their basic characteristics. Then only you will be able to answer the question. So option number 3, C and D is your correct answer. Then we come to the last. Okay, now there are some more questions. Match the following list. Learner's characteristics and their description. Which characteristic is giving the best description of which option? Academic characteristics, social characteristics, emotional characteristics, cognitive characteristics. Learner encodes and decodes relevant message correctly. वो अच्छे से इनकोड एंड डिकोड कर पाता है मैसेज को, मतलब अच्छे से समझ पाता है, अच्छे से एनालाइज कर पाता है. समझना, एनालाइज करना, दैट कम्स विथ योर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक. सो ऑप्शन नंबर 1 इज फॉर डी. डी का 1 है इसमें. लेट्स चेक द अदर. Learner selects different themes in his or her course when needed. Course, वो अपने थीम सिलेक्ट कर सकता है कोर्स में. सो समथिंग रिलेटेड टू योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल लेवल, कोर्स रिलेटेड थिंग्स कम्स इन एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ए का 2, ऑप्शन नंबर 1 या 3. लेट्स सी द अदर्स. Learner works as a team member of the peers. Team member means social characteristics, working with others, team member, social होना, society के साथ काम करना. Emotional characteristics goes with the last one. Learner starts respecting the individual difference evident in likes and dislikes of members of his class. So he starts respecting. He starts respecting the feelings of others. So feelings relate with emotional characteristics. So A का हो गया हमारा 2, B का हो गया हमारा 3, C का 4 and D का 1. So option number 1 is your correct answer. Clear? So you have to just relate them. Next, what are the characteristics of field dependent learners again? Field dependent. Let's see. Personalized curriculum. Yes, they have personalized curriculum. जैसा कि हमने पढ़ा, वो curriculum को personalize करते हैं. Rarely seeks physical contact with the teacher. This is wrong. Rarely seeks लिखा है. They need help from teachers. So this is wrong because they are dependent. Seeks guidance and demonstration from teachers. Yes, they need guidance and demonstration from teacher. Rarely लिखा है मतलब बहुत कम, तो ये गलत हो गया. ऑप्शन नंबर सी सही है. Likes to cooperate because they are dependent, so they likes to cooperate. They work alone. They prefer to work alone. जी नहीं, because they are dependent learner. They like to work with others. So option number A, C, and D. This is your correct answer. Clear? If you understand the basic characteristics, if you understand their basic like nature, then you will be able to answer the question yourself only. You just need to relate the keywords. Which of the following types of learner learn with the help of flow charts or diagrams? Flow charts and diagrams, which is relating with the visual representation. So visual learners जो है option number 2, that is your correct answer. So this is given from visual learner. Maybe you get question from physical learner, auditory learner, linguistic learner. So we have discussed all the important types of learner, so that if you get any question from learner's characteristic or from types of learner, you will always get it correct. Okay. So hope you understood whatever we discussed today. We discussed all the important characteristics of learners and all the important types of learner. If you get any question from these two topics, you will be able to do it correct, I'm sure. Right? So thank you so much for watching this video. Hope it was informative and helpful for you. Please like if you find this informative and share it with all your friends, groups. And let's wait for another video. We will be having another informative session very soon. Thank you so much for watching this again. And please subscribe to my channel if you are new, and see you again. Bye bye.